Hello everyone, this is OP sir and welcome to Ganitom mathematics. Since we have question number 2 of exercise 1.2, that is represent minus 2 upon 11, minus 5 upon 11 and minus 9 upon 11 on number line. Okay, so we will do that, and for that we will see some simple way how we can do that easily. So I am going to draw a number line. Actually, you can see that all three numbers are negative rational numbers. So it is better to go with negative only. 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9 and minus 10. And this means here it is very easy for us because in denominator it is 11 and which is throughout same in all three rational numbers. If it is not same, by taking LCM we have to make it same, but here it is already given. अब है क्या कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 11 है, so why not we will put everywhere 11. और हमारा जो तीन रेशनल नंबर है which we need, that is minus 2 upon 11, this one, minus 5 upon 11, this one, and so ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे. यही डिफरेंस वे है रिप्रेजेंट करने का और इजी वे है एक्चुअली रिप्रेजेंट करने का, कि हम जो है अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो पहले वो मेंशन कर दें, नेगेटिव नंबर्स मेंशन कर दें, डिनोमिनेटर में जो नंबर है सेम है, दैट इज वेल एंड गुड फॉर अस, वो मेंशन कर देंगे एंड देन वी विल रिप्रेजेंट, वी विल एनसर्कल दैट नंबर. थैंक यू स्टूडेंट्स.